दिखाते हैं तो इसका पूरा सिस्टम दिखाते हैं और इसकी पानी वाली मोटर खराब होती है उसको निकालते हैं। चलो आइसक्रीम यानी नई नई मोटर तो आपको खोल के दिखाएंगे कौन सी मोटर है। ये बड़ी मोटर है उससे है वो मोटर दिख रही है। ये हमारी बड़ी मोटर ये इसका इसके ऊपर कसने वाला है। इतना बड़ा इसका वायर है। ये बड़ी मोटर है। अब उसको डाल देना 220 वोल्ट की मोटर है 40 और जिसमें 20 जो अपने वायर के द्वारा उसको फेंक मार रहे हैं। तो हम मोटर को चला के देखते हैं कूलर को बस देखते चल रही है ना नहीं चल। हेलो गाइस अब हम मोटर चला के देख रहे हैं। हमने मोटर लगा दी है इसमें। ये अब मोटर चला के देख रहे हैं। यहाँ पे बटन है ये कर दी चालू। अब देख रहे हैं पानी कितना फेंक रही है। बड़ी मोटर है ये हमारी मोटर चल चुकी है। पानी सही फेंक रही है। अभी पानी भी भरा जाएगा और कूलर में पानी साफ है। मोटर बची है अभी फिर तेज निकल रही है और फिर चला देंगे और इसको अब इसको करते हैं बंद पूरा टिप्स क्यों हमें इसमें खाली पानी वाली मोटर डाल दी थी। अब इसको दिखाते हैं कैसे बंद किया जाएगा।
ये सब कस दिया है मैंने ऊपर, रेडी हो चुका है। चालू करके देख रहे हैं कूलर को।